Morning chanting, page 2, Hindi book. योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गम् इमे हि सकारी यथा अर्हन् आरोपिते हि अभिपूजयामः साधुनो भन्ति भगवा शुचिरपरिनिभृतोऽपि पश्चिमा जनता नुकम्पमानसा इमे सकारी दुर्गतपणाकारभूते पटिगृह्णातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय अर्हन् सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभाग नमकारं करोमसि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य त्रिरत्न वंदना हंदमयं रतनतय प्रणाम गाथा यो चेव संवेग परिकीर्तन पाठं च भणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणामहर्णवो योचन्त शुद्धवर ज्ञानलोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तम् धम्मोपदीपो वियतस्य सद्गुणो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकुत्तरो यो च तदर्थदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तम् सङ्घो सुखेताभ्यतिखेत सन्निधो योदिष्ठ संतो सुगतानुबोधको दुर्लभहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तम् पुण्यं मया यममम सबुपद्दवा माहोन्तु ते तस्य पावसिद्धया इह तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतपवेदितो मयं तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणम् अपि दुःखं
शोक परिदेव दुख दो मनुष्य उपाया सापि दुखा अप्रियेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यमपि इच्छं न लभति तमपि दुःखं संखित्तेन पंचुपादान खंदा दुःखा सेयथीदम् रूप उपादान खंदो वेदनोपादान खंदो संयो उपादान खंदो संघार उपादान खंदो विज्ञान उपादान खंदो ये संपरिन्याय धर्मानु सुभगवा एवं बहुलम सावके विनेति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यम वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम अनित्यम रूपम अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम अनत्ता सब्बी संखारा अनित्या सब्बी धम्मा अनत्ताति ते मयम् ऊतिनामः जातिया जरा मरणेन शोके परिदेवे दो मनस्य उपायासे दुःखोतिना दुःख परिता अपेव नाम इमस्य केवल दुःख खंदस्य अंतक्रियाय पयायेथाति चिर पर निभृतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटिप्पजाम सासानुपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःख खंदस्य अंतक्रियाय संवततु। हम हिंदी में अनंत लखन सूत्र का पाठ सुनेंगे। प्रस्तावना पढ़ना। हाँ। अनात्म लक्षण का प्रवचन। प्रस्तावना। सभी मनुष्यों को अनात्म लक्षण समझने का कठिन प्रयास करना चाहिए। अत्तभाव एवं अत्त संज्ञा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए सम्यक संबुद्ध ने उस सत्य को साक्षात्कार करके प्रकाश में लाया है, ताकि उच्चतर प्रतिवेदन की भावना करके उत्तम ज्ञान प्राप्त हो और दृश्यमान धर्मों का परीक्षण कर उनका संपूर्ण ज्ञान हो। चित्त के सभी आसवों से पूर्ण विमुक्ति हो। इस शिक्षा का ज्ञान पूर्वक अनुसरण करने की इच्छा करने वाले इसके शुभ फलों को सिद्ध करने हेतु इस सूत्र का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी में इसी पतन में मृगोद्यान में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने 5 भिक्षुओं के समूह को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, रूप अनात्म है। यदि रूप आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने रूप के बारे में यह कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। परंतु क्योंकि रूप अनात्म है, रूप हमें कष्ट देता है और हम रूप के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। भिक्षुओं, वेदना अनात्म है। यदि वेदना आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती
और हम वेदना के बारे में यह कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना न हो। परंतु क्योंकि वेदना अनात्म है, वेदना हमें कष्ट देती है और हम वेदना के बारे में यह नहीं कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना न हो। भिक्षुओं, संज्ञा अनात्म है। यदि संज्ञा आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती और हम अपनी संज्ञा के बारे में यह कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी न हो। परंतु क्योंकि संज्ञा अनात्म है, संज्ञा हमें कष्ट देती है और हम संज्ञा के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी न हो। भिक्षुओं, संस्कार अनात्म है। यदि संस्कार आत्म होते तो ये हमें कष्ट नहीं देते और हम अपने संस्कारों के बारे में यह कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे न हों। परंतु क्योंकि संस्कार अनात्म है, संस्कार हमें कष्ट देते हैं और हम संस्कार के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे न हों। भिक्षुओं, विज्ञान अनात्म है। यदि विज्ञान आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने विज्ञान के बारे में यह कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा न हो। परंतु क्योंकि विज्ञान अनात्म है, विज्ञान हमें कष्ट देता है और हम विज्ञान के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा न हो। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, रूप अनित्य है या नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, वेदना नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, संज्ञा नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, संस्कार नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, विज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है,
दुख है, परिवर्तनशील है। क्या उसे यह समझना, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनती। अतः भिक्षु जो भी रूप है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल का, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी वेदना है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी वेदनाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है। जो भी संज्ञा है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संज्ञाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है। जो भी संस्कार हैं, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संस्कारों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी विज्ञान है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी विज्ञानों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। इस प्रकार जानते हुए भिक्षुओं, श्रुतवान आर्य श्रावक का रूप से मोह भंग हो जाता है, वेदना से मोह भंग हो जाता है, संज्ञा से मोह भंग हो जाता है, संस्कार से मोह भंग हो जाता है, विज्ञान से मोह भंग हो जाता है। मोह भंग के कारण विरक्त हो जाता है, विरक्ति से चित्त विमुक्त हो जाता है, तथा विमुक्त चित्त यह जान जाता है मुक्ति हो गई है और पुनर्जन्म समाप्त हो गई है, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, करणीय कर लिया, अब और किसी अवस्था में आना नहीं होगा। भगवान ने ऐसा कहा। 5 भिक्षुओं के समूह ने प्रसन्न होकर भगवान के प्रवचन का अभिनंदन किया। जब यह प्रवचन दिया जा रहा था, 5 भिक्षुओं के मानस आसक्ति रहित हो, आसव मुक्त हो गए। वत्स शॉल है, चला फिर
Now meditate for 45 minutes and during this listen to the reflection by Raja Namru on Anapana and Nada. The practice of mindfulness of breathing is, for most people, the easiest, most accessible. Connected to 6B77382D. The practice of mindfulness of breathing is, for most people, the best accessible and supportive meditation object to use, particularly for developing concentration. It's a physical sensation. It's not exciting, it doesn't grab the attention, so it requires to bring attention to it. Unless the breathing is restricted, problematic in some way, generally the breath goes on in the background of our awareness. So it takes effort to bring it to the center, to pay attention to it, to follow its rhythms. So it helps to arouse that quality of chanda, interest, virya, energy. It also locks the attention into the body and thereby in the present moment, because the body never wanders off into the past or the future. The physical body is a guaranteed connection to the Paccuppanna Dhamma, the here and now reality. So the breath has many advantages, many blessings in this respect. Similarly with walking meditation. The act of walking for most of us is unremarkable. You need to bring attention to the act of walking, the feeling of the feet meeting the ground, because it doesn't grab our attention. It doesn't seem to be anything special or exciting or interesting, valuable. So it takes effort to bring attention to that, to sustain attention upon that. But there are many other meditation objects that can be used, different focal points to train the attention. We use mindfulness of breathing simply because that's a non-personal, natural form that all of us experience. There are many different objects, different methods to develop both concentration and insight. And another of these is to be attending to what is called the inner sound, or the nada. If we listen closely,
pay attention to the faculty of hearing, then in the background, behind the sounds of my words or between the words where there are silences, if we bring attention, we can notice a continuous inner high-pitched ringing tone, kind of silvery continuous flow of sound. Most people are able to experience this to some degree, some people not. Some people, it's very loud, very obvious. This is what Luang Por Sumedho calls the sound of silence, and can be used very directly as a meditation object. One of the advantages of listening to the inner sound, the sound of silence, is that unlike the breath, it doesn't respond to personal will. You can't decide to make it do anything. With the breath, we can breathe in, we can breathe out, we can hold our breath, we can breathe in a shallow way or a deep way. But with the inner sound, you either pay attention to it or not. Personal will and choice doesn't have any effect upon it. You can't decide to make it louder or softer. Those intentions have no effect. We can direct the attention to it, listen or not. So it helps to support that, the insight and the attitude of non-controlling, the attitude of receptivity, acceptance. Just listening, receiving the sound, knowing it. If you're able to hear this inner sound, to feel that inner vibration, then this is something that can be actively cultivated as a meditation object, as an alternative to mindfulness of breathing, or even in conjunction with it. Feeling the rhythm of the breath and hearing the inner sound there behind it, around it. Another of the advantages of developing this inner listening is that there's an energizing effect that comes about through focusing attention upon that. It seems to have a brightening, enlivening impact upon the level of attention, of arousal, mental alertness. So, the more you pay attention to it, the easier it is to pay attention. Rather than sending the mind to sleep, making it more dull, instead it has an enlivening, energizing, arousing quality to it. Luang Por Sumedho would always discourage any kind of theorizing, trying to figure out what this inner sound is, or where it comes from, or is there a proper name for it, or is it some kind of cosmic vibration? Is it just the electrical impulses in your ears? His encouragement, which I echo, is to not to get involved, not to create agitation and confusion around that. We can simply know that it's present, just like with the breath. We don't have to see the breath as some kind of symbolic cosmic rhythm, the tides of the universe washing in and washing out, but rather it's just the body breathing. We don't have to focus on the biology of respiration, but just know that sensation of that rhythm. In the same way with the inner sound, we don't have to come up with some sort of idea or opinion about what it is, or
where it comes from, but just use it. Here it is. And the more that you develop the listening to it, then the easier it is to notice. So, like right now, even as I'm speaking, I can hear it very clearly, continuously in the background, with the sound of my own voice, and the spaces in between, the inner sound continues. I've been using it for decades, so it's a very clear and obvious presence to me. Another of the advantages of the inner listening is that even though we call it inner listening or inner sound, you can't really locate it anywhere. So with the breath, maybe we focus on the breathing at the nostrils or in the chest or the throat. There's some place where we are breathing. We feel the breath in some spot in the body. But the inner sound, the nada, isn't really located anywhere. Location doesn't apply. It's not anywhere. It's present, but awareness doesn't apply. In this way, it's a very good symbol for the mind itself. The physical body has a location in space. Here we are. Amravati, St. Margaret's Lane, Great Gadsden, Hertfordshire. This spot, sitting here in the temple, this particular mat, here it is. This is where my body is located in space. But the mind itself is not located anywhere. Three-dimensional space only relates to rupa khanda, material form. The nama-khandas, feeling, perception, mental formations, consciousness, place doesn't apply. Location does not apply. So, in this quality of inner listening to the nada sound, that unlocated quality is present, but it's not anywhere. That is a good symbol, a good representation of the nature of mind itself. We can use the inner sound as a concentration object to focus the attention on that, and deliberately excluding other perceptions, other sounds, and use it as a focal point for absorbing attention, creating acute degrees, an acute quality of concentration. But also it can be used very actively and effectively to support insight meditation, the quality of awareness, the development of wisdom itself. So rather than focusing on the sound to the exclusion of other objects, we want to use it to support development of vipassana, insight, development of a more open awareness. Just let the sound be in the background of all experience. Just as I can hear the sound of my voice and the nada sound is there in the background, we can let that inner sound be like a wallpaper, a backdrop for the rest of our experience. There in the background. The physical sensations arise. There's the nada in the background. A thought, a memory arises. The nada is there in the background. We hear sounds, see visual objects. We open our eyes. We see the shrine or the temple or the grass and the trees around us as we walk. And the nada is always still there in the background. So in this way, the presence of that sound can be a reminder, can support those reflections on anicca, dukkha, anatta. It reminds
reminds that the actuality is the flow of perceptions, mental formations arising, taking shape, dissolving every moment. It helps to keep all of the field of experience in a correct context, enables the heart, the mind, to see things in their true light. Makes it easier not to get absorbed into a fantasy or a worry, an irritation, physical pain, or an opinion, or a sound. It supports that recognition. Oh, it's just a sound, it's just a feeling, it's just an opinion, it's just a memory, it's just an emotion, a mood. That's what it is. It's a mental event. So, to sustain it as a presence in the background of experience helps to maintain that quality of clarity, seeing the empty, fabricated nature of all experience, arising, taking shape, dissolving. Now it can be that when all this is said, for some people it's the experience is, I can't hear anything, what's he talking about? This is nonsense. Why am I always the one who's left out? Why is it always me that's the one that's not getting it? Sometimes this inner vibration is not discernible as a sound, but sometimes it's noticeable as a physical sensation, like a tingling, a vibratory quality in the fingertips or in the face, in the eyelids. Sometimes it's there as a quality of vision, a kind of subtle oscillation, a shimmering quality of our vision. Depending on which sense channel, sense door has been strongly developed, it can vary. So maybe it's more accurate to talk of it as a universal vibration or an inner vibration. But for most people, the faculty of hearing is where it's most noticeable. But if you can't hear it or feel it, notice it in any way, then please just leave these reflections aside. Use the other kinds of approach to meditation that you have been employing. Use what works for you, because ultimately that's the path we all need to follow. We see what works. If it works, it's the right thing. If it doesn't work, it's not the right thing. But if one can discern this inner sound, this is something that can be easily perceived, put it to work. Use it. Let it be something that's another skillful means, an upaya, that brings about that awakening, brightening quality of the heart, that feeds the quality of vijja, awakened awareness, and counteracts avijja, that darkness and distortion of unclear seeing, of ignorance, not knowing.
अच्छा करुण हिंदी, अच्छा हिंदी करुण इंस्ट्रक्शन meditation instruction. ब्रह्म विहारों का साधना करेंगे, प्रैक्टिस। पहले मैत्री का अभ्यास, सर्वप्रथम अपने प्रति, फिर अपने प्रियजनों के प्रति और फिर आरक्षण करने वाले देवताओं के प्रति। हम सभी सुखी हों, प्रसन्न हों, और सुखी और प्रसन्न तभी होंगे जब चित्त द्वेष से मुक्त होगा, वैर से मुक्त होगा, चिंता से मुक्त होगा।
इसीलिए ट्रेडिशनल चांट्स में जो अकुशल चित्त की चेतना है उसके न होने की कामना की जाती है। शरीर का ध्यान करते हुए मन में भाव लाते हुए करेंगे तो और अच्छा लगेगा और लाभदायक होगा। सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च नातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापज्जाहोन्तु अनीगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आरक्षा देवता भूमट्ठा देवता रुक्षट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अविराहोन्तु अव्यापज्जाहोन्तु अनीगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। हम समस्त प्राणियों के प्रति उसमें प्रयास करते हैं जिनके प्रति कुछ रिजेंटमेंट हो, द्वेष हो, नाराज़गी हो, उनको भी याद करके उनके प्रति भी वैर समाप्त हो, उनका भी हमारा भी द्वेष समाप्त हो, चिंता समाप्त हो, ऐसी शुभकामना। और सभी प्राणियों के प्रति, पुरुष हों, स्त्री हों, धरती पे हों, आकाश में हों, पानी में हों, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, चाहे नरक में ही क्यों ना हो, सबके प्रति मंगल मैत्री। सर्वे सत्ता सर्वे पाना सर्वे भूता सर्वे पुंगला सर्वे अत्ता भाव पर्यापन्ना सम्माइत्यो सर्वे पुरुषा सर्वे अरिया सर्वे अनरिया
सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अवेराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनीगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब करुणा ब्रह्म विहार। जो भी प्राणी दुखी हैं, यदि हम कुछ लोगों को जानते हैं तो उनको याद करके, या जनरली इस समय सारे विश्व में अत्यंत महामारी के कारण लाखों करोड़ों लोग दुखी हैं, अपने शहर से, अपने देश से फिर विश्व तक फैलाते हुए, याद करते हुए सबको जो कष्ट में है उनके प्रति करुणा का भाव जागे। सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, उपचार में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। सभीतियो विवर्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तराय सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव। अब उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, आभार, जो इन कठिन परिस्थितियों में रोगियों की सेवा में लगे हैं, हम सब की सेवा में लगे हैं, जो घरों में बंद हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उन सब के प्रति आभार। हम उन सब के साथ अपने पुण्य साझा करें, इस कामना से कि वो सुरक्षित रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। पुण्यस्य इदानी आना अन्यानि कथानि मे ते संचे भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। अब मुदिता ब्रह्म विहार। जो लोग प्रसन्न हैं, जिनको हम जानते हैं, घर में खुशी का कोई कारण है, उनको याद करके उनकी खुशी में शामिल होते हैं। और जनरली जो हज़ारों लोग बीमारी से मुक्त हुए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, उन सब की खुशी में साझा होते हैं और शुभकामना करते हैं कि उनकी खुशी बनी रहे, सुख संपत्ति बनी रहे।
यथा लब्धा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु। इच्छा ब्रह्म विहार। सुख दुख की परिस्थिति में हमारी चित्त की समता बनी रहे, चित्त कंपायमान न हो, हमारा भी और सबका। लाखों लोग दुखी हैं वो भी समता बना रख पाएँ, सुखी हैं वो भी समता में रहें, और हम सब जो घरों में बंद हैं वो भी समता बनाए रखें, अपनी शांति की पारवी बढ़ाएं। और जो समता बढ़ाने में दिक्कत आती है, जब हम देखते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है, ऐसा लगता है भासमान सत्य, तो उसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ मान के मन में रोष जागता है, द्वेष जागता है। तो इसलिए भगवान की वाणी है, उसको याद करें तो समझ आती है कि हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, जो भी परिस्थिति आती है, और अब जैसे कर्म करेंगे उनका फल भविष्य में भोगेंगे। तो इसलिए मन में द्वेष न जगाएं, समता बनाए रखें। चाहे कितना भी सत्य हो कि इन लोगों के कारण देश में बीमारी बहुत फैल रही है, ख़ासतौर पर दिल्ली में बहुत फैल रही है, बार बार हमें ख्याल आता है, फिर भी एक अच्छे साधक होने के नाते मन में द्वेष न जागे, समता बनी रहे। तो भगवान की वाणी को याद करना बड़ा लाभकारी होता है। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। और कर्म जो है मंडेन राइट भी है, उसके साथ साथ लोकोत्तर सम्मादृष्टि, आर्य सत्यों को निरंतरता से जानना, उसका भी हम प्रयास करते रहें। क्योंकि चित्त कंपायमान तभी नहीं होता जब, जैसे हम रतन सूत्र में भगवान की वाणी सुनते हैं, यथिंद थीलो पथविंत सियोसिता चतुष्पिवायु स्वसंपकंपियो सोपमा सत्पुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान अवेच पश्यति। अगर अर्य सत्यों को हम निरंतरता से देखेंगे तो हमारा चित्त भी कंपायमान नहीं होगा, तो वो हमारा अभ्यास बना रहे, ताकि हमारी दृष्टि सम्यक रहे, अपने दुखों का कारण अपनी तृष्णा को ही जानते रहे, और कोई गलत काम ना हो हमसे, किसी से भी सबकी दृष्टि सम्यक हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, न किञ्चित् शोकमागमात्।
दुःखमागमा भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि